Hello friends, this is Dr. Amit Gupta. I am starting a new series on how to use a laptop and for that matter any screen and how you can prevent a computer vision syndrome. Now what is a computer vision syndrome? Computer vision syndrome is a conglomerate of a lot of problems which happen because of continuous looking at near, because of your posture. So it is something which affects your neck, affects your eyes and generally affects your general well-being. So what are the points which affect you and how you should go about it so that there is no problem at all. So let me first enumerate what all topics we'll be talking on, what all we'll be covering, and we'll be covering them in the subsequent lectures also. So first is your posture. Where should you keep the screen? For that matter, as I said, any screen. So laptop I have taken as an example. Even phone when you use, you should be keeping your posture in that fashion only. So what is the posture? Second, do any rays come out of your screen which affect your eyes? That is the second part which we'll cover. The third part is how much sitting is good. And for that matter, should you be sitting from morning to night continuously? And if you do, what are the problems and what you should be doing otherwise where your work is not affected and you could do your work also. Fourth, how are your eyes affected? So there are a couple of things which happen in your eyes. It's continuous looking at near. Your numbers, are they affected because of this? That is the spectacles you're wearing. What kind of spectacles for a person like me who needs near vision glasses, what kind of spectacles should you be using? Should you be using a progressive glass? Should you be using a only near vision glass? What should you be using and whether you need any coatings on them? So we'll be covering all these topics. So today I want to start off with posture. So what is the posture which is correct when we use a screen? Now there's a laptop here. This is the normal posture we have. Either we are keeping it on a lap or we are keeping it on a table which is lower than our posture. The screen, the top of the screen is quite low. And now if I look at the screen like this, if you see my posture, my neck has to turn. And if I'm sitting like this from morning to night, I will get a cervical spondylitis. I'll get pain here. It can be on the sides, it can be on my shoulders, I can get vertigo which is dizziness, all these things are possible. दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कोई भी स्क्रीन आपको कैसे यूज़ करना है। इसमें हम काफ़ी चीज़ों पे बात करेंगे, तो मैं पहले आपको बता दूं हम किस किस चीज़ों पे बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे कि आपको स्क्रीन किस हाइट पे कैसे रखना चाहिए, आपको कैसे बैठना चाहिए। नंबर 2, आपको कितनी देर बैठना ठीक है या नहीं है। नंबर 3, आपका स्क्रीन से कोई ऐसी रेज आ रही हैं जो आपकी आंखों को बुरा असर डालती हैं। नंबर 4, आपकी आंखों पे कैसा असर आता है और क्यों आता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि आपको कैसे बैठना चाहिए और उससे फ़र्क क्या आता है। अगर हम अपना स्क्रीन जैसे भी मैंने दिखा रखा है ऐसे रखते हैं या हम अपने लैप पर रखते हैं तो हमको गर्दन मोड़ के बैठना पड़ता है यूँ। अब अगर हम गर्दन ऐसे मोड़ के बैठेंगे तो आप देखेंगे मेरी ये गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई है और क्योंकि गर्दन मुड़ी हुई है यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसका असर पड़ता है। जब सर्वाइकल होता है तो आपको सिर के पीछे दर्द हो सकता है, सर के साइड में दर्द हो सकता है, कंधों पे दर्द हो सकता है, आपके हाथ तक दर्द आ सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इसके लिए क्या तरीका सही है? तरीका क्या सही है? जो आपके स्क्रीन का ऊपर वाला पार्ट है ये आपके एग्जैक्टली आई लेवल पर होना चाहिए। इसके अलग अलग तरीके हैं, या तो आप इसके नीचे खूब सारी बुक्स रखिए और इसको ऊपर कर लीजिए। दूसरा है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक कंप्यूटर स्टैंड है जिसको मैं आपके सामने लगाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो कि ये मैंने थोड़ा सा देखा हुआ है किस लेवल पे ये आता है, उसी हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। ये मैंने लगाया और स्क्रीन को ऊपर कर लिया। अब ये स्क्रीन मेरे लेवल पे आ रहा है, मेरी आंखों के लेवल पे। अब आप ऐसे टाइप कर सकते हैं पर कई लोगों को ऐसे टाइप करने में दिक्कत होती है, तो आप एक दूसरा स्क्रीन लेके नीचे लगाएं और उसको आप यूज़ कर लें और इसको एक तरह का अपने डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आपको फ़ोन भी यूज़ करना है तो फ़ोन ऐसे यूज़ करना है, यूँ करके पूरे दिन बैठेंगे तो गर्दन के पीछे दर्द शुरू हो जाएगा, चक्कर आना पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पॉस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दूसरे पार्ट पे आते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे को पास का चश्मा चाहिए जो मैंने पहना हुआ है। पास का चश्मा 2 किस्म का होता है, एक होता है बाईफोकल या प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, या एक सिंगल विजन सिर्फ पास का चश्मा।
अगर आपका काम लगातार पास का है, विच मीन्स लगातार पीसी पे है, तो आपको सिर्फ पास का चश्मा पहनना चाहिए, आपको प्रोग्रेसिव या बाईफोकल यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? प्रोग्रेसिव में या बाईफोकल में पास का नंबर लेंस के नीचे के पार्ट में होता है, तो आप जब यूँ देखते हैं, आप यूँ नहीं देख सकते, आपको गर्दन उठा के थोड़ा देखना पड़ता है, और फिर आप अपनी गर्दन हिला नहीं सकते, क्योंकि आप थोड़ा भी हिलाएंगे आपकी नज़र अफेक्ट हो जाएगी, विजन अफेक्ट हो जाएगी। पूरे दिन आप यूँ बैठे हुए हैं, लगातार स्ट्रेन कहाँ आ रहा है? आपके गर्दन पे। क्या होगा? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल होएगा तो दर्द कहाँ होगा? यहाँ पे, साइड में, या आपके कंधों पे। आगे चक्कर आएंगे। ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर आप इसको शुरू से इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम कोई भी स्क्रीन यूज़ करना है उसमें है कि आपका पॉस्चर ठीक है या नहीं है। आपका अभी तक काम चल रहा है, अभी तक दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं है, दिक्कत अभी तक नहीं है, आगे हो सकती है। तो ये मेरा इन्विटेशन है, प्लीज़ अपना पॉस्चर ठीक करें और वैसे ही काम करें। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं जी हमारे 2-3 स्क्रीन है, इधर भी है, इधर भी है। तो जो प्राइमरी स्क्रीन है उसमें आप सीधा बैठेंगे, आपकी स्विवल चेयर होगी। स्विवल चेयर मतलब जो चेयर घूम जाती है, और आप गर्दन मोड़ के नहीं देखेंगे, आप चेयर को घुमाकर सीधा उस स्क्रीन पे देखेंगे। आप बारी बारी गर्दन मोड़ेंगे तो साइड में स्ट्रेन आता है, यहाँ पे या यहाँ पे दर्द शुरू हो सकता है। तो इन चीज़ों का शुरू से ख्याल रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ पे आते हैं, इस स्क्रीन में से ऐसी क्या रेज आती हैं जो आपकी आंख पे बुरा असर डालती हैं। आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि ब्लू रेज आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं, वो रेज आ रही हैं। आज से काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी अरसे पहले, हम कंप्यूटर स्क्रीन में कैथोड रे ट्यूब यूज़ करते थे, जिसमें बड़ा स्क्रीन, मोटा स्क्रीन होता था टेलीविज़न का, जिसमें ट्यूब होती थी। उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट और दूसरी रेस का आने की संख्या या अमाउंट ज़्यादा होता था। अभी जो स्क्रीन हैं एलईडी या एलसीडी स्क्रीन, इनमें से लाइट को छोड़ के दूसरी कोई रे बाहर नहीं आती। ब्लू लाइट थोड़ी आती है। ब्लू लाइट जितनी स्क्रीन से आती है वो आपकी आंख पे कोई भी डैमेज नहीं करती। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट्स हैं, आपको उसके लिए अलग से कोटिंग्स और ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। लगातार स्क्रीन पे काम करने से जो परेशानियां आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि हम पूरे दिन पास में देखते हैं और दूर में नहीं देखते, और इस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज करते ही नहीं। तो जो प्रॉब्लम मोस्टली स्क्रीन पे है वो मसल्स की वजह से है, क्योंकि हम पूरे दिन नज़दीक में देखते हैं और दूर में हम बिल्कुल देखते नहीं। हमको ऊपर वाले ने आउटडोर एनिमल बना के भेजा था जिसमें आंखें बनी थी 12 में से 8 घंटा दूर देखने के लिए। हम हार्डली आधे से पौना घंटा दूर देखते हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ से आ रही। सो डियर फ्रेंड्स, we were discussing how to sit on a screen. So one, I have already explained that the top of the screen has to be exactly at your eye level. For that you have to put a computer stand, or you have to put some books and put it straight. If you're not able to use this keyboard, you have to put another keyboard, attach it to the laptop, and then that you can convert this laptop into a desktop and then use it comfortably. The second part is, even if you use a phone, you have to use it in this way. The phone has to be slightly up. You should not be sitting like this. Again, otherwise these same problems happen. If you have more than one screen, so you're not supposed to keep your head tilted like this, then you'll be straining this part of your neck or this part of your neck. You have to have a swivel chair which can turn. So once you're looking at the main screen, you look straight. If you have looking at this screen, please turn your chair and look straight. So you should always be looking straight at a screen, and you should not be turning your neck every few minutes and keeping it turned. The other part which we wanted to discuss is, are any rays coming out of the screen which affect your eyes? There are a lot of advertisements going on about blue light, about ultraviolet light. So let me tell you, these things used to happen when we used to have a cathode ray tube as a screen, which is long time back. Nowadays we have LED or LCD screens from which no ultraviolet light is coming out. The amount of blue light which is coming out hardly affects your eyes, so you don't need any kind of filter for it. In fact, you should not be using a blue light filter for daytime, because blue light is telling your brain that this is not sleep time. Melatonin, which is a hormone secreted in the brain, should not come out. It inhibits that release. So we should not be using a blue light filter in daytime. So what all advertisements are going, please don't fall or succumb to them. We just need normal glasses, near glasses, no other problems.
Plus, like I am wearing a near vision glass. For a near vision glass, there are 2-3 kinds. One is a single vision near vision glass, or you can have a progressive or a bifocal glass. If you have a progressive or bifocal, it is not a suitable glass for a person who has long hours of near or computer work. Why? If I am wearing a progressive glass, the near number is on the lower side. If I have to look at a screen, I'll have to turn my head up like this. And if I'm sitting like this for the entire day, slowly I'll strain my neck and cervical spondylitis will start. So it's absolutely important that you don't fall prey to people trying to send you a progressive glass. Progressive glasses are for people who have to continuously change their viewer angle. That is, they are looking at near, then they are looking at distance, they are looking at near. That means you are in public dealing, you have to talk to somebody continuously and look at the screen. Then progressives can work, otherwise it is not a suitable glass. Now, coming to what you should be doing, especially when you have to work on a screen for a very long time. Now, these things I'll be discussing in the next video. So please look out for the next video on this topic, which we'll be posting soon. Thank you.